Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear students in the subject of Internet Architecture and Protocols. It's Ghulam Yasin, lecturer in Computer Science, University of Education Lahore, DG Khan campus. Dear students, our today's topic is ISDN, Integrated Services Digital Network. Objectives of this lecture: Introduction to Integrated Services Digital Network, ISDN channels, B channel, D channel, ISDN services, BRI which is Basic Rate Interface, PRI which is Primary Rate Interface, ISDN advantages, ISDN architecture, ISDN devices and how they operate. ISDN devices include TE1, TE2, TA, NT1 and NT2 devices. So dear students, in this lecture we will study in detail about the said mentioned topics. ISDN. ISDN stands for Integrated Services Digital Network. ISDN is an international standard for sending voice, video and data over digital lines. It is a standard developed by CCI-ITT/ITU, which is Consultative Committee for International Telephone and Telegraph/International Telecommunication Union. So dear students, in this topic, basically the discussion is this: when we want to send voice, video and data over digital line, we can send all this type of traffic using ISDN, which is integration, which is amalgamation. What does it mean again? It means that using ISDN we can send voice, we can send video, we can send data over digital lines, and this is standard developed by ITU. Second point, ISDN uses a standard phone lines, a copper wire pair in a home or office and converts it from single analog circuit into multiple high-speed digital circuits capable of transmitting audio, still images, motion videos and text data simultaneously. This is very important that using the existing copper wire which is installed by PSTN, Public Switch Telephone Network, like PTCL in our country, we can send digital transmission. Although copper wire, which is basically analog transmission system, but using that system we can send digital data, and this is very high speed transmission. तो ISDN से बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल डाटा को एट द सेम टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारा एनालॉग डाटा डिजिटल डाटा में ट्रांसमिट होने के बाद ट्रांसफ़र होगा. ISDN channels, the B channel, bearer channel or B channel. B channels are used to transport data. B channels are called bearer channels because they bear or carry the data. B channels operate at speed of up to 64 kilobits per second, although the speed might be lower depending on the service provider. Basically, the data which is sent by the sender is sent with the help of B channel. So basically B channel is data. B channel is used to transport data and this operate at 64 kilobits per second. B channel डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो जो डाटा सेंडर ट्रांसफ़र करेगा उस डाटा को सेंड करने के लिए हम B चैनल यूज़ करते हैं. D channel. The D channel is used for control signaling, call setup and may also carry some data. Basically, when the sender wants to transmit data towards receiver,
there must be a channel. So this channel, this D channel is used to create that channel. This D channel is used to create a call setup. Second point, D channels carries the signaling information for setting up and clearing down calls. When the data will be transferred, then that circuit must be disconnected. Third point, ISDN signals new data calls using the D channels. When a router creates a B channel call to another device using a BRI or PRI, it sends the phone number it wants to connect to inside a message sent across the D channel. जब कभी सेंडर और रिसीवर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले जो एक चैनल एस्टैब्लिश होगा, सर्किट एस्टैब्लिश होगा, जो कॉल सेटअप होगा, वो इस डी या डेल्टा चैनल की वजह से होगा. D channel. D channels can be of different sizes depending on how many B channels they are controlling. For a BRI, basic rate interface, the D channel is a 16 kilobits per second pipe. For a PRI, primary rate interface, the D channel is a 64 kilobits per second pipe. Basically, when the sender will transmit data towards receiver, there must be a predefined circuit which will be established by D channel. And there are two services of ISDN, BRI and PRI. As I have just discussed, basic rate interface and primary rate interface. If a sender will use BRI, then the D channel will be of 16 kilobit per second. And if the user will use PRI, then the D channel is of 64 kilobit per second. So dear students, BRI जब हम यूज़ करेंगे उस वक्त D चैनल का साइज 16 किलोबिट्स पर सेकंड होगा और इसमें हम कम डाटा रेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और जब PRI सर्विसेज यूज़ होंगी तो D चैनल का साइज 64 किलोबिट्स पर सेकंड होगा जिसमें हम ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ISDN services, a basic rate interface, BRI service offers 2 B channels and 1 D channel, and 1 B channel is equal to 64 kilobits per second, which is used to carry data, and 1 D channel is equal to 16 kilobits per second, which is used to carry control and signaling information. This BRI uses 2B and 1D channel, 2B plus 1D. The B channels are dialable and the D channel can be always on. Many users combine both B channels for a 128 kilobit per second data channel. Existing one or two pair of twisted pair cable is used to provide full duplex digital communication. So dear students, in first point, this is very clear that if you will use ISDN service and ISDN BRI service, there will be 2 B channels and 1 D channel, and single B channel is equal to 64 kilobit per second. So 64 plus 64, 128 kilobit per second. This is used for data transmission, and 1D is 16 kilobit per second, which is used for signaling transmission. And the next 2 points explains that B channels are dialable. It means when a user wants to transfer data, that will be used this channel dialable, and after that the user will transmit data. And the last point, existing twisted pair cable is used. It means existing infrastructure is used to transfer data for full duplex digital communication. And what is full duplex transmission? It means that at the same time we can transmit and we can receive data. BRI service used for residential and small office use.
इसको हम रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं BRI सर्विस को, क्योंकि इसमें डाटा रेट कम है, जिसमें हम मैक्सिमम 144 किलोबिट पर सेकेंड यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग डी चैनल। एग्जिस्टिंग टू वायर लोकल लूप्स सपोर्ट BRI। एग्जिस्टिंग टू वायर लोकल लूप मीन्स जो एग्जिस्टिंग PTCL का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करते हुए ISDN सर्विसेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। A BRI will allow users to access both voice and data services simultaneously. This is very important point in ISDN, that at the same time we can transmit voice as well as data simultaneously. Next point, depending on your hardware, you can connect up to 8 distinct devices to your BRI. This is again very important in ISDN, that at the same time we can use 8 different devices. It means if we have ISDN device like DSL device at our home or in our office, we can connect 8 different devices simultaneously, and these devices will transmit voice and data at the same time. Next point, this allows you to build a network of devices, both phone, this may be your analog phone, which is traditional telephone set. Data, it means I'm going to use laptop, you're going to use cell phone, so you can connect with the help of ISDN, and video and use any 3 of them at the same time. Means at the same time you can connect 8 different devices. Note, while some people will promote the BRI as being 144 kilobits per second data channel, 64 plus 64 plus 16, remember that only the 128 kilobit per second B channel's bandwidth is commonly available to the user. The 16 kilobit per second data channel is reserved for signaling in most circumstances. So it means that normally companies offer BRI service at the rate of 144 kilobit per second, but actually the data transmission rate will be 128 kilobit per second, because 2 B channels or 64 plus 64 is equal to 128, so actual data rate will be 128 kilobit per second. PRI services. PRI's second service of ISDN. PRI ISDN is used by large businesses. Primary rate interface service offers 23 B channels and 1 D channel. 23 B channels and 1 B channel is equal to 64 kilobits per second. So if there are 23 channels, we will multiply 23 by 64. So this will be total data rate of PRI channel. And 1D channel, which is 64 kilobits per second, carry control and signaling information. It can also support user data if required, and signaling protocols comprise of OSI layer 1 to layer 3. So as I have discussed earlier, D channel is used just for signaling. This channel is used to establish a circuit between sender and receiver. And there are two specifications of PRI. 23B plus 1D channel used in North America and Japan supports total bit rate of 1.544 megabits per second. 23B channel means again 23 multiplied by 64 plus D means 64. तो हम 23 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 64 ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल डाटा रेट होगा which will be 1.544 megabit per second. And next specification is 30B plus D used in Australia and other countries. It means हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, जो हमारा टोटल डाटा रेट होगा फॉर डाटा ट्रांसफर, और डी चैनल विच इज अगेन 64 किलोबिट्स पर सेकेंड, जो हम यूज करेंगे सिग्नलिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा टोटल डाटा रेट इस स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड होगा। इसका मतलब ये है
जब हम VRI और PRI को कंपेयर करते हैं तो बेसिक रेट इंटरफेस जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमारा मैक्सिमम डाटा रेट जस्ट 144 किलोबिट्स पर सेकेंड है, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ 2B चैनल्स हैं। और अगर हम PRI सर्विसेज की बात करें तो इसमें हमारे पास दो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। एक स्पेसिफिकेशन में हमारा डाटा रेट 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है और दूसरी स्पेसिफिकेशन में हमारा डाटा रेट 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है। BRI एंड PRI B&E चैनल्स इस स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में जो हमने अभी डिस्कशन किया उसको एक्सप्लेन किया। अगर आप स्टार्ट में देखें तो उसमें आप टाइप इंटरफेस देख रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम आप नंबर ऑफ B चैनल्स देख रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ D चैनल्स और लास्ट में आप डिस्क्रिप्टिव टर्म देख रहे हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले BRI बेसिक रेट इंटरफेस, जिसमें हमारे पास 2B चैनल्स हैं और 1D चैनल है और इसमें अगर हम डिस्क्रिप्टिव टर्म देखें दैट इज 2B प्लस 1D। उसके बाद हमने PRI की बात की थी, प्राइमरी रेट इंटरफेस की बात की थी और PRI में हमने टू स्पेसिफिकेशंस देखी थी। पहली स्पेसिफिकेशन की हमने बात की थी नॉर्थ अमेरिका और जापान की। तो T1 इज फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड जापान and there were 23 D channel and 1 D channel, but keep in mind that D channel in BRI is of 16 kilobits per second and D channel in PRI is of 64 kilobits per second and descriptive term is 23B plus 1D। उसके बाद हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकेशन की। सो PRI E1 is for Australia and other countries और उसमें हमने 30 B चैनल की बात की थी और 1 D चैनल की बात की थी। तो 30 B प्लस D दिस विल बी टोटल डिस्क्रिप्टिव टर्म, या जिसमें हमने डाटा रेट की बात की थी वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ISDN BRI एंड PRI सर्विसेज, तो इस स्लाइड में सर्विसेज को इन डिटेल टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। Service is BRI and B channels 2 multiply by 64 kilobits per second and 1D channel which is 1 multiply by 16 kilobits per second and the total bandwidth is 144 kilobits per second. And we have discussed in our previous lecture about bandwidth, which is total capacity of a channel. When I have to transfer data from sending device to receiving device, I must have some bandwidth, and if the bandwidth is more, data rate will be high, and if the bandwidth is less, the data rate will be low. So when we will use BRI, the data rate will be low because the bandwidth is just 144 kilobits per second. Second service is T1 PRI, in which there are 23 B channel and 23 multiplied by 64 kilobits per second and 1D channel 1 multiplied by 64 kilobits per second. So total data rate is 1.544 megabits per second. Next is E1 PRI, in which there are 30 B channels and 30 multiplied by 64 kilobits per second, and there is 1D channel 1 multiplied by 64 kilobits per second. Total data rate is 2.048 megabit per second. So it means if I need high speed transmission, I will use E1 PRI, and if my need is low bandwidth, then I will use BRI. Advantages of ISDN. Dear students, as we have discussed earlier that multiple devices can be attached with ISDN switch with the help of ISDN technology. So multiple devices, previously it was necessary to have a separate phone line for each device you wish to use simultaneously. For example, one line each was required for a telephone, fax, computer, a live video conference system.
What does it mean? It means that if I want to transfer data with the help of computer, I need a separate line. And if I want to transfer voice with the help of telephone, which is our standard telephone, I must have a separate line. And if I want to send data in the form of fax, I need a fax machine and I need a separate line. But the advantage of ISDN is this, that at the same time, 8 multiple devices can be attached. Next slide, inshallah, we will discuss in detail about this concept. So next topic is fast connection time. Protocols such as IP and IPX are better supported by ISDN connection across wide area network due to faster connect time between 1 and 4 seconds than analog service between 10 and 40 seconds. In ISDN, when the call will be established, which is call setup, we have discussed in the previous slides about call setup, and D channel is used for call setup. The call setup time is between 1 to 4 seconds, and because this is digital transmission, the call setup is very at very low time. But in analog transmission, call setup takes 10 to 40 seconds. Next topic is compatibility. ISDN is compatible with other WAN services like X.25, frame relay, or higher speed services like ATM, asynchronous transfer mode. So dear students, इससे पहले हम ATM और फ्रेम रिले को डिस्कस कर चुके हैं. इसका मतलब ये है कि अगर किसी नेटवर्क में हम ISDN डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं, हम ATM टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं और हम फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को आपस में आप कंपैटिबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. सो आपको कोई सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ ISDN you can transfer data, and likewise ATM और frame relay हम at the same time एक नेटवर्क में यूज कर सकते हैं. Dear students, इस स्लाइड में एक ISDN का कंप्लीट आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसी आर्किटेक्चर को इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस आर्किटेक्चर को ड्रॉ कर लें, ताकि नेक्स्ट स्लाइड्स जब आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इस आर्किटेक्चर के लिए अगेन इस स्लाइड पर मूव ना करना पड़े. तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा साथ, ताकि नेक्स्ट स्लाइड्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. सो इस स्लाइड में, इस आर्किटेक्चर में आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो आप 3 डिवाइसेस देख रहे हैं. TE1 डिवाइस विच इज कंप्यूटर, TE1 device which is ISDN telephone, and TE2 device which is standard telephone. तो ये आपको 3 डिवाइसेस नजर आ रही हैं. आप इसी तरह से 8 डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आप मजीद कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं या लैपटॉप अटैच कर सकते हैं. इसी तरह से आप मजीद ISDN टेलीफोन यूज कर सकते हैं और आप मजीद स्टैंडर्ड टेलीफोन यूज कर सकते हैं. इसके बाद आपको TE1 और NT2 डिवाइस के दरमियान एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जो S इंटरफेस है, और लास्ट में आपको स्टैंडर्ड टेलीफोन और TA के दरमियान इंटरफेस जो आप R इंटरफेस देख रहे हैं. दीज आर जस्ट इंटरफेस नेम जिसको हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज स्टैंडर्ड, सो वी विल यूज S एंड R. और इसी तरह से नेक्स्ट डिवाइस NT2 और NT1 के दरमियान आप इंटरफेस T देख रहे हैं, और इसी तरह से आप NT1 इंटरफेस और ISDN स्विच के दरमियान जो इंटरफेस है वो आप U देख रहे हैं. अभी हम इसको इन डिटेल देखते हैं. व्हाट इज NT1, व्हाट इज NT2, व्हाट इज TA, व्हाट इज ISDN टेलीफोन एंड सो ऑन. लेकिन सिर्फ इस स्लाइड में बेसिक एक आर्किटेक्चर है जिसमें ISDN स्विच है, उसी तरह से जैसे DSL डिवाइस हम घर में यूज़ करते हैं और हम DSL डिवाइस के साथ मल्टीपल लैपटॉप अटैच करते हैं, उसी तरह से यहाँ हम मल्टीपल डिवाइसेस को ISDN स्विच के साथ अटैच करेंगे और हम इन डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंट इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं.
NT1 network termination 1 device. So dear students, in the previous slide we have discussed about ISDN architecture, and now we will study in detail about the devices which are used in ISDN architecture. So what is NT1 device? NT1 includes functions associated with the physical and electrical termination of ISDN on the user premises. These corresponds to OSI layer 1. ये devices OSI layer 1 पर ऑपरेट करती हैं, जो हमारे OSI की 7 layers हैं, तो ये layer 1 पर ये devices ऑपरेट करती हैं, NT1 devices. It may be controlled by the service provider. It provides a physical connector interface for user device attachment. As we have discussed in frame relay network, that DCE device which is basically in the premises of service provider, so NT1 is like that device which is normally controlled by service provider. It also perform line maintenance function. Line maintenance basically is used for wireless or wired media. It supports multiple channels using synchronous TDM. TDM is basically time division multiplexing, in which we allot time slots for a user to data transmission. Functional devices NT1. The network terminator 1 is a device that communicates directly with the central office switch. The NT1 receives a U interface connection from the phone company and puts out to a T interface connection for the NT2, which is often in the same piece of physical hardware. In the previous slide, we have discussed about interfaces. So the interface between NT2 and NT1 is T, and the interface between NT1 and the ISDN central switch is U. So NT1 device will take the data from NT2, which is basically T interface, and this NT2 device will forward the data to ISDN switch with the help of U interface. So these interfaces may be considered like a line which is used for data transmission. Next point, the NT1 handles the physical layer responsibilities of the connection, including physical and electrical termination, line monitoring and diagnostics, and multiplexing of D and B channel. So NT1 device will monitor the line. Basically line is again your media. Diagnostic, if there is any problem, then that problem will be checked with the help of troubleshooting. And multiplexing of D and B channel, it means at the same time multiple channels data will be transmitted. So this is multiplexing, and there are two techniques of multiplexing: frequency domain multiplexing and time domain multiplexing. Network termination to NT2. NT2 is an intelligent device that can perform switching and concentration functions. It includes functionality up to layer 3 of OSI reference model. So dear students, NT2 is connected to NT1 with the help of T interface, and NT1 is connected to ISDN central switch with the help of U interface. Examples are digital private branch exchange and a local area network. What is digital private branch exchange? About local area network you have studied and you have heard, so I will just explain about digital private branch exchange. Dear students, normally when we call to any company like Ufone, Telenor, Warid or Mobilink, so there are multiple options. Let's suppose press 1 for this service, press 2 for this service, press 3 for this service, and so on. Normally when we call to helpline, just we dial a single number. Let's suppose if we dial about a Ufone helpline, so we'll dial 333,
and after that there will be multiple options. Likewise, if we call to any office or university, let's suppose if you call to University of Education and you will dial a single number, let's suppose 042 and after that the number of that university, then you will dial multiple extensions to talk multiple offices in that university. Those numbers which you will dial, let's suppose 21, 24, 26, 21 for admission, 24 for examination or 26 for accounts. So these are called extensions or extension numbers. So when a company create this type of exchange in its own network, that is called private branch exchange. So basically, University of Education will get a single number from PTCL, and after that the University of Education will create a private branch exchange, which is basically extension numbers network. So this is called PBX or private branch exchange. So next point is the concentration function. Multiple devices attached to a digital private branch exchange or a LAN may transmit data across an ISDN. क्योंकि हम मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज करेंगे और उन डिवाइसेस से हम डाटा ट्रांसफर करेंगे. लास्ट पॉइंट, NT2 डिवाइस इज यूज्ड where we have to provide switching facility जिसमें हमें डाटा फॉरवर्ड करना होता है. That's why we will use NT2 device. Network Terminator 2. The NT2 sits between an NT1 device and any terminal equipment or adapter. So where is NT2 device? This is basically between NT1 device and the device which is using to transfer data. For example, a standard telephone set, ISDN telephone or computer. Second point, NT2 accepts a T interface from the NT1 and provides an S interface. As we have already studied that these interfaces are like lines between these devices. So these devices will accept data with the help of these different lines or these interfaces. Last point, in most small installation, the NT1 and NT2 functions reside in the same piece of hardware. If there is a small network, then NT1 and NT2 device will be same, like our switches are our connecting devices. But in large network, NT1 device will be different and NT2 device will be different. So there will be two different switches for the purpose of connection, for the purpose of connecting multiple devices. Network Terminator 2. In large installation, including all PRI installations, the separate NT2 may be used. As we have discussed that if we will use BRI, then the data rate will be 144 kilobits per second. But if we will use PRI services, then the data rate will be 1.544 megabits per second or 2.048 megabits per second. So in these kind of network or in these kind of different services, we have to use two different devices, NT1 as well as NT2. ISDN network, routers and digital private branch exchange are example of common NT2 device. So अब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपको कि जब हम राउटर्स यूज करते हैं या हम प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज यूज करते हैं जिनके साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक राउटर्स के साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, हम प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज के साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. मल्टीपल डिवाइसेस जिसमें हमारे स्टैंडर्ड टेलीफोन सेट हो सकते हैं, जिसमें हमारे ISDN टेलीफोन सेट हो सकते हैं. तो इन डिवाइसेस को हम NT2 डिवाइसेस कहते हैं. The NT2 handles data link and network layer responsibilities of ISDN installation with many devices, including routing and contention monitoring.
तो इसमें एक तो राउटिंग है जो हमारे डाटा को फॉरवर्ड करना है, और दूसरा है कंटेंशन मॉनिटरिंग। कंटेंशन मॉनिटरिंग जहां किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से डाटा कोलाइड होना स्टार्ट हो जाए, उस स्पेसिफिक इशू को भी ये डिवाइसेस मॉनिटर करती हैं, ये डिवाइसेस ऑब्जर्व करती हैं। इस तरह से अगेन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें तो आप इन स्लाइड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम अगर अगेन हम उस स्पेसिफिक डायग्राम को देखें तो हम NT1 को डिस्कस कर चुके हैं, NT2 को डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह से अगर हम T1 डिवाइस को अगेन देखें, दैट इज आवर कंप्यूटर विच इज डिजिटल डिवाइस, और सेकंड इज ISDN टेलीफोन सेट, अगेन दिस इज डिजिटल डिवाइस। और डिजिटल डिवाइसेस के लिए आपको कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट डिवाइस विच इज़ स्टैंडर्ड टेलीफोन सेट, उसमें आपको एक कन्वर्टर चाहिए, दैट इज़ TA। अगर आप देखें पहली और दूसरी डिवाइस में जो डिजिटल डिवाइस है उसमें TA यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन जो लास्ट डिवाइस है विच इज स्टैंडर्ड टेलीफोन सेट उसमें TA यूज़ है। दिस इज बेसिकली टर्मिनल एडॉप्टर, जिसमें हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेलीफोन एनालॉग वॉइस को ट्रांसफर करता है, लेकिन ISDN हमारा हमारा डिजिटल नेटवर्क है। तो जब तक हमारा डाटा डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसफर नहीं होगा तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस तरह से स्टैंडर्ड टेलीफोन के डाटा को, वॉइस को, एनालॉग डाटा को डिजिटल में ट्रांसफर करने के लिए हम TA यूज करेंगे। सो इस तरह से हमारा ये ISDN का टॉपिक कंप्लीट हो गया। So dear students, thank you very much for your